Hello everyone, I hope you are doing well and good. Today we will be studying about somatoform psychophysiological disorders. Somatoform disorders are a group of mental health conditions where individuals experience physical symptoms that cannot be fully explained by any underlying medical condition. जो इंडिविजुअल है वो फिज़िकल सिम्टम्स तो एक्सपीरियंस कर रहा है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता किसी भी मेडिकल कंडीशन के थ्रू. दैट आर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. And psychophysiological disorders involve a combination of psychological and physical factors. These disorders are characterized by the interaction between psychological stress or trauma and physical symptoms. See, what are dissociative disorders? Dissociative disorders involves disruptions in a person's consciousness, memory, identity, or perception. They are considered psychological conditions that affect how a person experiences and processes reality. वो reality से ही detach हो जाता है, अपनी identity को भी भूल जाता है, detachment हो जाता है उसका thoughts, feelings, memories से. ठीक है, it's like feeling disconnected from the reality. Dissociation is a defense mechanism that helps individuals cope with overwhelming or traumatic experiences. ये होता क्यों है? Many dissociative disorders are linked to a history of trauma such as physical or sexual abuse. ये कोई पास्ट में ट्रॉमा हुआ होता है जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं. The second reason is psychological factors as well. Individuals' vulnerability, genetics, and certain personality traits may contribute to the development of dissociative disorders. And therefore, coping mechanism बन जाता है dissociation. Dissociation can serve as a way of individuals to mentally separate from distressing experiences. इसके symptoms क्या हुए? Dissociative amnesia. What is dissociative amnesia? Inability to recall important personal information often related to traumatic events. वो information ही recall ना कर पाना. That inability to recall that information is dissociative amnesia. Specifically ये traumatic events के लिए ही होती है कि वो इंसान वो trauma को याद ही नहीं करता है, recall ही नहीं कर पाता है. The next is depersonalization disorder. इसमें क्या होता है? Feeling detached from oneself as if observing oneself from outside the body. अपने आप से ही detach हो जाना. Next symptom is dissociative identity disorder. Presence of two or more distinct identities or personality states within one individual. एक ही individual के अंदर अलग अलग personalities का होना. That is dissociative identity disorder. The next symptom is dissociative fugue. Sudden and unexpected travel, you can say, accompanied by amnesia for one's past and confusion about identity. इसमें क्या होता है कि सडन और अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होता है. वो घर से तो निकल जाता है, बाद में भूल जाता है कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या थी, खुद ही भूल जाता है. कन्फ्यूजन हो जाती है उसको अपने पास्ट के बारे में कि वो क्या था. साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन बिटवीन psychological and physical factors. They can manifest as psychogenic pain, movement disorders, non-epileptic seizures, hypertension, irritable bowel syndrome. These disorders highlight the connection between mind and our body. Psychogenic pain क्या होता है? This type of disorder involves the experience of physical pain that is influenced by psychological factors. Physical pain के साथ साथ हमें psychological factors भी महसूस हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर इमोशनल डिस्ट्रेस. दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकोजेनिक पेन. अब साइकोजेनिक मूवमेंट डिसऑर्डर क्या है? दीज डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और ट्रेमर्स दैट आर नॉट कॉज्ड बाय अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, हम काँप रहे होते हैं, हाथ काँपते हैं जब हमें एंग्जाइटी होती है ना. कईयों के साथ होता है कि ये दिस इज़ साइकोजेनिक मूवमेंट डिसऑर्डर. एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, उनके हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं डर के मारे. साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स
आर द डिसऑर्डर्स लाइक एपिसोड्स दैट आर नॉट कॉज्ड बाय एबनॉर्मल ब्रेन की वजह से नहीं हो रहा होता है, एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी की वजह से, बट आर ट्रिगर्ड बाय साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हमें हो रहा होता है. नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन. स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है. एंड द अदर इज इरिटेबल बोल सिंड्रोम. दिस इज अ gastrointestinal disorder that is influenced by stress, anxiety and other psychological factors. किसी को एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, वो क्या होता है, सीधा वॉशरूम भाग जाता है. सी gastrointestinal disorders क्या होते हैं? These can have various causes including genetic factors, diet, lifestyle choices, infections, inflammations and stress. Genetic factors can play a role in conditions like IBS, जो मैंने आपको बताया, irritable bowel syndrome and celiac disease, making some individuals more susceptible to these disorders. Diet and lifestyle choices such as consuming a high fat or high sugar diet, excessive alcohol consumption, smoking, इन सब की वजह से भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर्स. कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी, जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है, लाइक Helicobacter pylori, can lead to conditions like gastritis and stomach ulcers. Inflammation in the gastrointestinal tract can be caused by autoimmune disorders such as Crohn's disease and ulcerative colitis. अगर हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो कि हैं क्रोन्स डिजीज़ या फिर अल्सरेटिव कॉलिटिस. अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पर्टिकुलरली स्ट्रेस, can also impact gastrointestinal health. Stress can affect the movement and function of digestive system, leading to symptoms like abdominal pain, bloating and changes in bowel habits. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किसकी वजह से हो सकते हैं? एलर्जेंस की वजह से. एक्सपोजर टू एलर्जेंस सच एज pollen, डस्ट, mites, pet danders and mold can trigger respiratory disorders like allergic rhinitis, asthma, allergic bronchitis. इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की वजह से भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. इनहेलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक स्मोक, chemicals and particulate matter can irritate the respiratory system and can lead to conditions such as chronic obstructive pulmonary disease and also lung cancer. Smoking. Tobacco smoke, both active and passive, is a major risk factor for respiratory disorders, including lung cancer, chronic bronchitis, and emphysema. Infections also play a role in respiratory disorders. Infections caused by viruses, bacteria, fungi can result in various respiratory disorders such as common cold, influenza, pneumonia, and tuberculosis. जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी have a genetic component making individuals more susceptible to developing these conditions. Even occupational exposures भी respiratory disorders को लीड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक asbestos, silica and chemicals can increase the risk of respiratory disorders, including occupational asthma and pneumoconiosis. And psychological factors including stress and anxiety can impact respiratory health. They can lead to hyperventilation, shallow breathing and increased susceptibility to respiratory infections. Cardiovascular diseases are the conditions that affect the heart and blood vessels. Unhealthy lifestyles. Factors like poor diet, high in saturated fats and cholesterol, lack of physical activity, smoking, excessive alcohol consumption, chronic stress can increase the risk of cardiovascular disorders. Hypertension, जिसको हम हाई बीपी बोलते हैं, इसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, लीडिंग टू कंडीशंस लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, हार्ट फेलियर. High cholesterol, elevated levels of LDL cholesterol, often referred to as bad cholesterol, can contribute to the formation of plaque in the arteries, narrowing them and increasing the risk of heart disease. And individuals with diabetes are at higher risk of developing
cardiovascular diseases due to the impact of high blood sugar levels in blood vessels and heart. अगर कोई फैमिली हिस्ट्री भी रही है, genetics also play a role in the development of cardiovascular diseases. Having a family history of conditions like coronary artery disease or heart failure can increase the risk of cardiovascular disorders. Moreover, एज के साथ भी cardiovascular diseases के चांसेस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं. Men are generally at a higher risk until women reach menopause, after which the risk is increased. Obesity की वजह से भी cardiovascular diseases हो सकते हैं. Being overweight or obese can contribute to the development of cardiovascular diseases. Why? As it increases the strain on heart and raises the likelihood of other risk factors like high BP and diabetes. Skin disorders पढ़ लेते हैं. Genetics, obviously they play a great role, such as eczema, psoriasis and acne can have a genetic component. If a family member has a history of these conditions, there may be an increased risk. Okay, and then comes allergies and sensitiveness. Allergens such as certain foods, pollen, pet dander or chemicals in skincare products can trigger skin reactions or exacerbate existing skin conditions. Hormonal changes also play a great role. Hormonal fluctuations during puberty, pregnancy, menopause can contribute to the development or worsening of skin disorders such as acne or melasma. Conditions like autoimmune diseases, for example lupus or immunodeficiency disorder, can affect the skin's health and lead to various skin disorders. Infections, bacterial infections, fungal और viral infections, इसकी वजह से भी skin disorders होते हैं. For example warts, ringworm, impetigo. Moreover, environmental factors, UV rays जो पड़ती हैं, pollution, irritants, chemicals या fabrics can irritate the skin and trigger or worsen skin disorders. Emotional or psychological stress can impact the skin's health, contributing to conditions like eczema, psoriasis और acne. स्ट्रेस की वजह से भी हमारी स्किन डल होने लग जाती है. पुअर स्किन केयर प्रैक्टिसेस ऑल्सो, improper cleansing, excessive scrubbing, using harsh products or not moisturizing enough can disrupt the skin's natural barrier and lead to skin disorders. ओके गाइस, थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.